Hello everyone, welcome to Career Launcher, and we are back with the analysis of IIM Bangalore undergraduate aptitude test. And this is the second mock that we are doing the analysis of the second mock. And again, we have Jyoti ma'am with us in this session. Hello everyone. Okay, so there is an information about IIM Bangalore UG that has out recently that they have actually changed the time limit of exam from 120 minutes to 135 minutes. And the problem over there is they did not give us the bifurcation of IIM Bangalore sectional time limit. There might be sectional time limit this time, there might not be sectional time limit this time, as well as so basically what we have thought of, we are going to give you variety of the mock setups where you can actually understand that what if there is an exam without sectional time limit, what if there is a time, every section has increase of 5 minutes of time limit, or different variations, because IIM Bangalore has not given us any clarity about it. So let's move on to the this mock. So structure is same, that is 15 questions of verbal ability, logical reasoning. We have 15 questions, and quantitative is 30. This time we have not given the time limit because we also do not know the time limit because the Bangalore has not released it yet. And last year we had sectional cutoff of QA. There was no sectional cutoff of VA and LR. But this year they are going to give some weightage of VARC and LR when they are going to selecting the candidate. So it's not like you can leave any of the section blank and try to maximize your score in QA. No. So basically you have to attempt all three sections and maximize the score. Last year for general category, the cutoff was 114, NC OBC it was 75, EWS that was 78, and so on. So basically these kind of things you can see. Okay. So I think Shashank, if they are not giving, or if we are not giving any time limit to the sections, don't you think students should still try and stick to a particular time limit and not spend too many minutes on one particular section? Ma'am, obviously, because this time they have already mentioned one point ना कि वो लोग हर सेक्शन का वेटेज दे रहे हैं, ठीक है, तो दे रहे हैं। आप छोड़ कुछ नहीं सकते, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप मैथ्स में कैरिड अवे हो गए और आपने देखा ही नहीं। ऑब्वियसली, सो आपने 135 मिनट्स का 20 मिनट्स मैथ्स में ले लिया तो आपका नहीं होगा, ये गारंटी है, बिकॉज दे आर गिविंग वेटेज. आई एम नॉट श्योर दे आर गिविंग कट ऑफ और नॉट, बट वेटेज दे रहे हैं. हाँ, सो अगेन मैम, यहाँ पे आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग. कैन यू शेयर सम स्ट्रेटजीज ऑफ बाइफर्केशन ऑफ द टाइम लिमिट्स? अगर सेक्शनल टाइम लिमिट दी है तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, तो मुझे पता है कि वर्बल में इतना ही टाइम देना है, एलआर में इतना ही टाइम देना है, क्वांट में इतना ही टाइम देना है. व्हाट इफ दे डू नॉट गिव अस एनी टाइम लिमिट, एनी सेक्शनल टाइम लिमिट, एंड लेट्स से दे ओपन इट के 135 minutes and here are your 60 questions solved. So in that case, how would you approach the paper? सी पहला पॉइंट तो ये कि उसमें थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाएगा सबको कि लेट्स से मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है और वो मैं जल्दी से कर लेती हूँ, सो प्रॉब्ली आई विल सेव सम टाइम. और इंग्लिश में मुझे पैसेज रीडिंग में ज़्यादा टाइम लगता है तो आई कैन डिवोट दैट, बट देन इट विल डिपेंड अपॉन कि उस पर्टिकुलर टेस्ट में लेवल क्या है. बट जनरली 15 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश जिसमें से कम 5-6 क्वेश्चंस वो कैब से रिलेटेड हैं, तो शुड नॉट टेक मोर देन 20-25 मिनट्स एट मैक्स. So in general, verbal section should not take more than 20-25 minutes. 20-25 minutes. Okay. And what's your opinion about LR? LR, Shashank, LR has more of maths questions है ना, so blood relations, directions and वो सारे questions हैं. उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है. So but then if they finish 20-25 minutes में verbal, तो फिर इतना टाइम है कि anybody who's well practiced वो दोनों sections आराम से कर लेगा based on their competency.
तो जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रही हूँ तो कुछ बच्चे एआर में स्ट्रगल कर रहे हैं, रीजनिंग में स्ट्रगल है, और लेकिन मैथ्स ठीक हो गया है, और कुछों का उल्टा है, क्वांट में प्रॉब्लम है लेकिन रीजनिंग फटाफट हो जा रहा है। तो फिर उसमें टाइम प्लस माइनस किया जा सकता है। बट अगर वर्बल को स्ट्रांग होल्ड करके 20-25 मिनट्स में कर लेंगे, अगर टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ, सेक्शनल टाइम लिमिट, तो टाइम ज्यादा मिल जाएगा बाकी दो सेक्शंस के लिए, जो आई थिंक थोड़े ज्यादा ट्रबलसम होते हैं कंपेयर टू वर्बल। So basically that will sort things out अगर सेक्शन टाइम लिमिट नहीं है. So 25 minutes VA, 30 minutes around LR, बाकी टाइम क्वांट को. So around 70-80 minutes for quant. I think that is pretty decent. Okay, and last year's cutoff was 114 for general, and I don't think this is going to be big deal. And now, if you look at the score, the highest score in LR is 45 out of 45. So किसी ने तो आग ही लगा दी है. In VARC, it's 41, so someone has attempted, got one question wrong. QA, someone got two questions wrong, they attempted everything, and the score came out to be 84. Now, in LR, average score is 26, median is 27, so people are doing reasonably well in LR. QA DI, I would say that's a decent score. एंड VARC में 24 और 25. मैम व्हाट डू फील अबाउट दिस पेपर के 24-25 नंबर क्या ठीक है इस क्वेश्चन में? 24 मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 8 क्वेश्चंस, राइट? ज्योति मैम. So Shashank, I can't hear you. am I audible now? Am I audible? Yes, 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 you are. Yeah, but I can't hear you. Okay, okay, just give me a moment. uh, Uh, am I audible now? Different. Yeah, just एक give me a बार इसको minute. I'll देख log लेते in हैं. from the other device also, and see if that is solved. Huh? Just give me a minute, Shashank. ठीक है. ठीक है. सो जब तक मैम वापस से रीजॉइन कर रही हैं तब तक हम लोग एक चीज समझ लेते हैं. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? So I won't get into VARC. I'll talk about this one. So exact breakdown जो VARC का है, that is easy. There were 10 questions that are easy, difficult were 2, medium were 2, easy to medium there were 1 question. For logical reasoning there was no difficult question, but 9 questions are easy, 4 are medium, 2 are easy and medium. And for QADI, only 1 question was difficult, 3 were medium, 13 were easy, and 13 were easy medium. So basically that we can also see in the scores as well, that highest is 85, 84, and verbal में तो कोई difficult था ही नहीं. So people attempted actually 15 out of 15 and they got the actual scores. So I think that is a very good thing that have been done. But in verbal, I think people could have scored more. 8 questions they have done right. So मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है. But again, I'm till ma'am is joining, so I'll leave this part. ठीक है. So I'll move to LR. ठीक है. So LR, we had 3 questions of arrangement, 3 questions of blood relation, 3 questions of statement argument, 2 questions of series, 1 of coding, 1 of sentence inferences, 1 is odd one out, 1 is mathematical puzzle, and 1 is direction. So basically we got these questions. ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, right? Now the question numbers that were difficult are given here. That
Okay. So basically, question number 30 question number 30 is a question that is skipped by maximum number of people. Question number 29 is again skipped by a lot of people. That is 29% of the people. Question number 16, 28% of the people. Question number 29. And 29 is actually easy question, and it has been skipped by most of the people. That is something that I don't think what happened in the exam, that people left question number 29. That is considered as easy. And let's look at question number 29. Let's see whether it is actually easy or not. This is question number 28. Okay, now this is a question of direction. I never consider a question of direction that is difficult. You might make some mistakes in this, but this is not a question that is skippable. Ma'am, is it fine from your end? Ma'am, you are mute. Can you unmute yourself? Let me try. Can you hear me? Uh-huh. Yes, yes, yes. Ma'am, your voice is echoing. Can you turn off other device? Then I think that will be fine. वो दूसरी डिवाइस की वजह से ज़्यादा इको कर रहा है. Yeah. So before giving it to ma'am, I'll just solve this first question. That Shambhu was going to Shiv Temple. He started from his house and walked 1.5 kilometer east. Okay. So I am going to say he is walking 1.5 kilometer east, then turned right. Right means this direction, that is 2.5. Then he turned east again, walked 1 kilometer, and this is 1.5. And then he goes south, 4. Okay. And then he reached his direction by walking 2.5 kilometers. Okay, now this is 1.5, this is 1. So 2.5 kilometer west is directly going to be here. So this is 2.5, this is 4. So he is 6.5 kilometers south, and that is the simple answer. And I'm not sure why people left it, or I can think of one reason, that it is one of the last questions of the section. That's the reason people skipped it. Otherwise, it was pretty easy. Okay. So I'm moving to verbal section. So basically, ma'am, before we move to verbal section, now if you look at this average score is 24 questions out of 45, means मोटा मोटी 8 क्वेश्चन सही. ठीक है मैम. मैम, आर यू देयर? ठीक है. So in verbal, we got 8 question right. In LR, that is the average score I'm talking about, average or median. ठीक है. Means median means 50% people are scoring more than 25, 50% people are scoring less than 25. So in LR it is 9 questions. Median is मतलब लोग Yeah, ma'am, hi, Shashank. Yeah, am I हाँ audible you and are, it's not echoing? yes, Yeah. yeah, So we yeah. are finally sorted. Sorry for this trouble. No, no, it's fine, perfectly fine. But your video is still switched off. हाँ, ठीक है. Yeah. So Okay, now? I was I was talking about one thing, that in VARC the average score is 8 questions. 8 question on an average सही है. 50% people scored less than 25, 50% people scored more than 25. Do you think it's a good attempt, 8 questions in verbal section? Nahi. Nahi. I think this mock was particularly very easy, Shashank. जितने भी questions थे, even the RC questions, barring one or two odd questions, the RC questions were super easy. वो कैब क्वेश्चन एकदम एंट्री लेवल क्वेश्चन था.
सो Okay. अभी तो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस आए ही नहीं मॉक में. दे शुड हैव सॉल्व्ड मोर देन दिस. सो आई वुड से 12 to 13 अटेम्प्ट्स एक्यूरेट हो सकते थे. ठीक है. So this is the chart. So chart राइट. means the red line is telling us about the accuracy. So this is the accuracy and this is the number of attempt. So first question is attempted by close to 85% people. The accuracy is very low. That is 25%. मतलब 100 में से 20 लोग का सही है केवल. वन ऑफ द रीजंस, एक रीजन ये है कि वो एक टोन क्वेश्चन था, स्टाइल ऑफ द पैसेज क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन आधे बच्चे डर के मारे छोड़ देते हैं. एंड दो द ऑप्शंस वर नॉट वेरी क्लोज, क्लियरली एलिमिनेट हो सकते थे बाकी ऑप्शंस. इफ आई लुक एट द ऑप्शंस, प्रिस्क्रिप्टिव, एक्चुअली ये पैसेज था ऑन, इट वाज फ्रॉम बिजनेस एंड इकोनॉमी. इट टॉक्ड अबाउट हाउ public limited companies are utilizing subsidiaries, and they are trying to misrepresent their financial accountability and all that. Yeah. अब जब हम ऑप्शंस पे जा रहे हैं तो प्रिस्क्रिप्टिव तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ऑथर कुछ प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है. प्रिस्क्रिप्टिव होता है जब ऑथर एक प्रिस्क्राइबिंग फॉर्मेट में होता है, यू शुड डू दिस, वी शुड डू दैट, एंड द सेबी शुड डू दिस. ये वाला टोन कहीं पर भी नहीं है. आर्ग्यूमेंट ओरिएंटेड भी नहीं था, आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल नहीं है. ही इज नॉट ट्राइंग टू जस्ट फोर्सिबली पुट हिज पॉइंट ऑफ व्यू और एक आर्ग्यूमेंट को वो सब्सटैंशिएट करने की कोशिश कर रहा हो, वो भी नहीं है. क्रिटिकल मीन्स नेगेटिव, ही इज क्रिटिसाइजिंग द होल थिंग. कहीं कहीं पे माइल्डली उसने बोला कि यू नो द व्हेन there are multiple subsidiaries and subsidiaries are clearly showing their accounts, but the main company is not doing that. थोड़ा नेगेटिव है, बट इतना नहीं है कि वो क्रिटिसाइजिंग हो जाएगा. सो दैट इज वाई वो भी इजीली एलिमिनेट हो सकता था. दिस क्लियरली वाज डिस्क्रिप्टिव बिकॉज इट वाज डिस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑपरेटिंग फॉर द कंपनीज. Right. तो ये ऑप्शन इतना मुश्किल नहीं था. दो टोन क्वेश्चंस आर स्कैरी, आई अंडरस्टैंड, but I'll give them the point ki normally when you start doing your passages, I don't know what point of journey the students are in, but when the students start doing their passages, तो उन questions थोड़े तंग करते हैं और वो थोड़ा बाद में करेक्ट होना शुरू होते हैं जब ओवरऑल हमारा कॉम्प्रिहेंशन, ओवरऑल होल्ड ऑन द पैसेज इंक्रीज होता है. Agreed. तो दो इफ यू आस्क मी, वन वाला क्वेश्चन हम कर सकते थे सॉल्व, बिकॉज सारी ऑप्शंस वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं थी. So इफ यू गो टू द if I सेम पैसेज, या द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर गुड. क्वेश्चन नंबर 2 तो क्लियरली वो कैब क्वेश्चन था, वेरी सिंपल वर्ड. इट वाज अ disclose सिटर क्वेश्चन फॉर एवरीबडी. डिस्क्लोजर. disclosure. हाँ, या सो कम्स फ्रॉम द वर्ड डिस्क्लोज, वेरी रिलेटेड टू दैट. और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सीधे सीधे आंसर है तो इसका. बिना पढ़े भी आप आंसर कर सकते हो बिल्कुल. एंड एक्चुअली आपने क्योंकि देखा होगा इसका एक्यूरेसी रेट भी अच्छा था. हाँ, और मैम इसमें जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है. सीधे कंप्लायंस इज अ कुछ डिफरेंट भी थिंग, नहीं. सब्सिडरी इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, एफिशिएंसी इज डिफरेंट थिंग, मेकिंग समथिंग नो. ओके, सो दैट वाज अ प्रीटी इजी वन. दिस वन. क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी था, बट आई थिंक अगर बच्चों ने मिस किया होगा तो प्रॉबेबली नॉट वर्ड नहीं देखा होगा. बट व्हेन यू वर शोइंग मी द एक्यूरेसी चार्ट, उसमें एक्यूरेसी रेट वाज गुड, करेक्ट. हाँ. सो क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाज नॉट मेंशन्ड. अच्छा, अब ये बी इजी क्यों था? आई डोंट नो बच्चों ने नोटिस किया या नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन स्टेम था वो कह रहा है व्हाट डज द ऑथर नॉट मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन द अबव पैसेज. आप Yes. ऑप्शन बी पढ़ोगे, द ग्रेटेस्ट कंप्लायंस एंड डिस्क्लोजर्स बर्डन इज ऑन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. क्वेश्चन पूछा है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के बारे में, ऑप्शन में दिया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में. तो ये तो तो क्लियरली आंसर. अगेन आई वुड कॉल इट अ सिटर, आई वुड कॉल इट अ सिटर. सो आई तो एक ही थिंक ऑप्शन है जिसमें उन्होंने
पर्पस ही चेंज कर दिया. या प्लीज. राइट. अब इसके अलावा मुझे लगता है जो इस टाइप के क्वेश्चन है इकोलॉजी वगैरह ये सब तो आई थिंक एमबीए करने जा रहे हैं ये सब तो पता होना ही चाहिए. सो दैट इज डायरेक्टली बीबीए प्लस एमबीए बेसिक और बेसिक वोकेबुलरी. सो इट्स लाइक अगर जब हम वोकैब पढ़ाना शुरू करते हैं, सो देर इज, आई वुड कॉल, अ नर्सरी केजी लेवल ऑफ वोकेबुलरी इन टर्म्स ऑफ प्रेप. हम्म. तो एक एंट्री लेवल वोकैब होती है जो पता होनी ही चाहिए, और उसके आगे ऊपर आते हैं और थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स. ये एंट्री लेवल वो कैब वर्ड है. और इनफैक्ट इसमें जितने भी इस मॉक में क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि शायद ये सेकंड ही मॉक है, तो सारी वो कैब इज एंट्री लेवल. इट्स लाइक अ बेयर मिनिमम नेसेसिटी कि ये तो पता होना ही चाहिए वाला. इट्स वेरी इजी. अगेन दिस वन इट एंट्री इज वेरी लेवल. इजी. ठीक है. Someone who can speak, okay, that is. सेवरल So लैंग्वेजेस. so basically अगर इस पेपर को देखा जाए so basically you are saying कि आठ on an average 8 attempts obviously I think these are very low attempts. लेकिन इसमें एक और चीज भी हो सकती है कि what if students attempted and they got it wrong. So That's what I'm do saying. you ये तो wrong भी नहीं होने चाहिए. So this question, which is right now on the screen, a person who hates humankind. So when we start doing vocab, जो पहली चीज होती है, root words सिखाए जाते हैं, and this is like based on the most basic of the root words. So मिस अगर आता बच्चों है. ने ये गलत किया है, हाँ. मिसेड मतलब हेट, तो हेट्स ह्यूमन काइंड इज मिसएंथ्रोप, बहुत इजी है. मतलब अगर बच्चों ने, और दो ही वर्ड सिखाते हैं, सो फिल मींस लव, मिसेड मींस टू हेट. ये बेसिक, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये नर्सरी केजी लेवल का वोकैब है एप्टीट्यूड प्रेप में, मैं बोलूंगी तो अगर किसी बच्चे ने ये अटेम्प्ट करके गलत किया है, तो बस बहुत पढ़ने की जरूरत है अभी. मतलब यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर वोकैब देन. Yes. uh, Sentence completion type of things. So So these three are basically questions based on preposition. So typical preposition find out करना है. इसमें से एक ही क्वेश्चन है जिसको मैं थोड़ा ट्रिकी बोलूंगी, which is question number 9. 9. Okay. The tax policy change is retroactive. The right answer has to be two. Uh, लेकिन वो मेरे ख्याल से थोड़ा ट्रिकी हो सकता है. Retroactive to means effective from. Right. सो यही एक ट्रिकी है. बाकी दोनों prepositions, तो these are typical prepositions, means words that will take a typical preposition after them, कि उनके साथ में वही combination आएगा. And it is this comes from usage. अगर आपने वो कहीं पढ़ा है, if you have done questions like that, if you have seen the usage, तो आप गलत नहीं करोगे. Like affinity for is a very very particular combination. तो 10th मुझे लगा नहीं गलत होना चाहिए था, है ना. And let me acquaint you with. So you acquaint somebody with someone. That is why I said 10th and 11th doable questions थे. 9th में अगर आप फंसे हो, तो I will give it to you. Still give it to you. So this what is your opinion about this RC, this passage? This RC was easier than the first one. Okay. तो पहला वाला फिर भी थोड़ा कोर फाइनेंस एंड इकोनॉमी एंड प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एंड वो सब एरिया से था. जिस बच्चे पे इकोनॉमिक्स नहीं है, थोड़ा सा उनको लग सकता था पढ़ने में डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट में क्वेश्चंस उतने ही इजी थे. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड वांट टू टेल देम इज कि भैया अगर पैसेज पढ़ने में मुश्किल लग रहा है, तब भी पैसे छोड़ो मत. आपको जितना भी you can make out of it, do that and then go to the questions, and you will generally see that the questions are easier to get to. Right. अब ये जैसे वाला आपने passage बताया was definitely easier and a more interesting read. as you Easy. told that in So the this last was easier section and a more interesting read.
So I'm saying it, as you told that in the last passage कि मतलब क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर आ जाएगा. ठीक है. What is the meaning of disclosure? So basically, हाँ हाँ. should a student read the questions before they read the passage, or should the students read the whole passage then jump on the questions? So I आपका इसमें क्या normally tell them to go for a blend. I normally tell them to go for a blend approach. यानी पहले आप पैसेज के पहले 2 लाइंस पढ़ लो, बीच में से 2-3 लाइंस और पढ़ लो, प्रोबेबली द फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ, वो 2-3 ही पैराग्राफ्स होते हैं इनके लेवल पे, एंड देन द लास्ट 2 लाइंस. सो रीड दीज 5-6 लाइंस फ्रॉम द पैसेज सो दैट यू गेट अ जनरल आइडिया अबाउट द पैसेज. मतलब आपको ओवरऑल ना कुछ सीन समझ में आ जाता है कि ये कौन से जॉनरा से है, बिजनेस है, इकोनॉमी है, फिलोसफी है, आर्ट है, लिटरेचर है, समझ तो आएगा हम किस चीज के पैसेज से डील कर रहे हैं. फिर उसके बाद में जाकर के क्वेश्चन पढ़ लो एंड देन कम बैक एंड रीड द पैसेज. इफ दे डू okay. दैट, एक तो पैसेज के ऊपर कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो जाता है, ग्रिप बहुत अच्छा हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग इज मच बेटर. मैम आपकी आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही है, चली गई है एक बार. विल यू अनम्यूट योरसेल्फ एक बार. हाँ. हाँ. इज इट बैकिंग? No, actually it's echoing again. वो खिर खिर वाला थोड़ा सा साउंड है. बेटर. 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 Okay. So this passage was much easier, as I said. दिक्कत नहीं थी इसमें, पढ़ने में भी इजी था, story was good, and this was about how a leader in the company can manage the company in times of crisis, changes आए तो कैसे करना है in these uncertain times. Again, the questions were super easy. Barring one odd question, the questions were super easy. Right. So now if I look at this section, in this section you have two questions of statement argument, one question of statement inference. So what do you say about LR section? So statement argument or statement inferences के questions आपको कैसे लगे? Were they very easy, difficult, or what was your? Again, I don't know. Might come up and tell me कि मैम मैं तो खुद easy बोलते जा रहे हैं सब कुछ, but trust me, they were really easy. और question probably they were trying to check just one kind of concept for the students in this mock कि एक ही situation को अगर हम अलग अलग तरीके से पूछेंगे तो what is the outcome, and दोनों तीनों questions बहुत difference नहीं थे in the situation that they presented. So if you can go to the question 18, 21st and 27th, 3 questions है हमारे पास. This one. Right. So several offices are biometric entry systems, and employees have complained that the systems occasionally fail. इसमें because wet hands का दिक्कत है, तो इसमें of course conclusion one will not follow. Wet hands can interfere with the functions of the biometric entry system. No, the second one will not follow. Biometric entry systems are completely unreliable. So remember that rule when we talk about extreme
टर्म्स कि कहीं पर भी अगर एक्सट्रीम टर्म्स यूज हुआ है तो वहाँ पंगा है, राइट. सो दिस इज कंप्लीटली अनरिलायबल, तो कहीं पर भी नहीं हो रहे. हमारे स्टेटमेंट में बोला है कि दे occasionally fail to recognize wet hands. मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर बार wet hands फेल हो रहे हैं, उसमें भी occasionally दिया है. और स्टेटमेंट तो बोल रहा है completely unreliable, है ना. तो डेफिनेटली इसमें का आंसर 1 होना चाहिए. Conclusion one. Yes. Right. Then we have this one. 27 27 out of the 3 questions given, if I have to actually categorize one of the questions as tricky, if I have to, then I will put 27 in that category. क्योंकि इसमें जो inference है उसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए हो सकते हैं कि since it says that the school has introduced compulsory counseling sessions for students, वो जो introduced word दिया है ना स्टेटमेंट में वो थोड़ा tricky हो सकता था. But then if you look at inference 2, it says students previously had no access to counseling services. तो जो word पकड़ना था हमको, the key term here was not introduced, the key term that they should have got was compulsory counseling sessions. They have introduced the compulsory counseling sessions. It is not given that they introduced the counseling sessions. इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि पुराना. मैम आपकी आवाज क्रैक कर रही है. इसका मतलब मैम your voice is cracking actually. Shashank, I'll probably rejoin, and till that time you can keep taking the rest of the LR section. Okay. So let's look at these questions. So basically what is going to happen in this section, so while man joins, now if I'm going to look at question number 16, right? Now I found that a lot of people made mistakes, they did not attempt, and I don't understand why people did not attempt this question and why I am saying कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज ये गिवन है कि 15 इंटू 24 डिवाइड बाई 4. ठीक है, अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 4 इंटू 24. अब ये तो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटीजर चाहिए और ये वाली वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही, मतलब ये ऑप्शन तो सीधे ही खत्म हो गया. अब अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं कि डिवीजन और प्लस को इंटरचेंज कर दें. अगर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये प्रोडक्ट तो बहुत बड़ा आ जाएगा, लेकिन वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी. सो बेसिकली योर जॉब इज नॉट टू सॉल्व द होल क्वेश्चन, इज जस्ट लुक, रीड, अंडरस्टैंड. आंसर अपना काम है सही मार्क करना. So this is the approach we are going to take very quickly. Now again, in these kind of questions, if you are confused, it's perfectly fine. So these questions are called as data sufficiency questions, और इसमें थोड़ा सा practice के साथ you will be comfortable. And remember, this data sufficiency is not a topic, it's a type of question, and it can be asked in any topic. It can be asked in quant, it can be asked in reasoning, it can be asked in percentage, geometry, everywhere. So data sufficiency पे आप जो biggest learning चाहिए वो चाहिए how to pick up the correct option. Solve करना सबको आता है, लेकिन इसमें जो option selection है that is the trickiest part always. Okay, statement conclusion ma'am will cover. Now these kind of questions are very standard. So whenever you are trying to solve these kind of questions, always do one thing. What? Replace alphabets with your corresponding numbers. A is 1, B is 2, C is 3, D is 4, E is 5, and in more or less in every question you will be done, it will be good to go, you will be able to solve all those kind of questions. बड़ा स्टैंडर्ड अप्रोच है. नाउ इस टाइप के क्वेश्चन में, सो व्हाट इज द अप्रोच दैट यू आर गोइंग टू टेक?
देखो मैं तो एक सिंपल सी चीज देख रहा हूँ कि आई गॉट 2, मैं सीधे सीधे एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ, दैट इज 14, क्योंकि ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 11 है, ये 14 है, तो यहाँ पे 14 नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, अपने पास ये 2 बचे बस। ठीक है, सो नाउ आई एम अगेन, देयर इज अ कंफ्यूजन, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम अगेन गोइंग टू कन्वर्ट अल्फाबेट्स इनटू करस्पॉन्डिंग नंबर्स एंड गेट द आंसर। ठीक है, yeah, again, this looks like a lengthy question, but when you are going to solve, you are going to spend around 1.5 to 2.5 minutes to get the answer, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, देर आर टू मेनी लाइन्स, टू मेनी वर्ड्स टू रीड, सो whenever a question has a very huge word length, then it becomes a little problematic. सो इस टाइप के क्वेश्चन को वी कॉल इट R2 क्वेश्चन। R2 मतलब राउंड टू क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन आसान होते हैं उनको हम थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट या ट्रिकी होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम थोड़ा बाद में अटेम्प्ट करते हैं। अगेन, ब्लड रिलेशन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो मैं इसमें से whenever I teach blood relation, I tell one thing, ए प्लस बी मतलब ए इज ब्रदर, मतलब ए मेल है, बी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ए माइनस बी मतलब ए सिस्टर है, ए सिस्टर है इसका मतलब ए फीमेल है, बी का जेंडर कुछ भी हो सकता है। ए इंटू बी मीन्स ए इज मदर, ए फीमेल है, बी कुछ भी हो सकता है। ए डिवाइड बाई बी, ए फादर है, मेल है, बी कुछ भी हो सकता है। नाउ सी इज सन ऑफ एम, मतलब सी मेल होना चाहिए, एम का जेंडर मुझे नहीं पता। ठीक है, इसका मतलब सी कभी भी आखिरी में नहीं हो सकता, सी आखिरी में नहीं हो सकता मतलब ये चला गया। सी के बाद माइनस नहीं आ सकता, सी के बाद माइनस आएगा तो सी फीमेल हो जाएगा, तो मतलब ये भी चला गया। प्लस का मतलब भाई है, अब आई नीड टू चेक आइदर दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन, मैं बस इतना चेक कर लेता हूं, सी प्लस एन मतलब सी एन का भाई है, एंड एन इज द फादर ऑफ एम, ये तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी भी चला गया। सो दिस इज द अप्रोच टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगेन सीरीज का क्वेश्चन है, ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। Now, this question, 8 people A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a straight line, all facing north. B sits third to the right of F. ठीक है, so now Noor is asking explain question number 25. Okay, now let's see, 8 लोग हैं, so 8 लोग, मैम जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ए बी सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं, सब नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज माई राइट एंड दिस इज गोइंग टू बी माई लेफ्ट। ठीक है, अब बोल रहे हैं बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, सो ए डैश डैश बी, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, सी सो बी इधर बैठा है, 1 2, सी इधर आ गया। ठीक है, D sits at one of the extreme ends, D sits second to the right of D। अगर D एंड पे बैठा है और C राइट में बैठा है, इसका मतलब जो D होना चाहिए वो यहां पे होना चाहिए और E यहां पे होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। इसका मतलब A और C यहां तो नहीं बैठ सकते। ठीक है, बिकॉज A एंड C आर कंसेक्यूटिव, ए सी या तो यहां होंगे या यहां होंगे, ऐसा कुछ बनेगा। F इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ A। ठीक है, G सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। ठीक है, सो G यहां पे आ गया। Who among the following sits third to the left of H? ठीक है, अब मेरे पास 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है, A, C, G और B। ठीक है, I can have F over here, I can have H over here, this is what that is given। ठीक है, लेफ्ट ऑफ एच ई, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक अनदर अरेंजमेंट, ए सी जी सॉरी दिस इज जी, दिस इज बी। नाउ आई कैन हैव बी और एच, एनी ऑफ द गाइज। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ई एंड एफ, एनी ऑफ द गाइज सिटिंग हेयर, एंड एफ एंड एच, एनी ऑफ द गाइज सिटिंग हेयर। ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच मतलब एच यहां पे तो बैठ ही नहीं सकता, मतलब एच यहीं बैठेगा। अगर एच यहां बैठा है तो 1 2 3, आंसर केम आउट टू बी सी। अंडरस्टूड?
ठीक है. So no, a lot of times what happens, don't try to solve and make the arrangement, because a lot of times we miss out a lot of things. So generally read the question and उससे ही आंसर निकाल लो. मैं तो क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन एलिमिनेट करता चला जा रहा हूँ, दैट्स इट, डूइंग नथिंग एल्स. मेक सेंस? सो मैम, आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27, दिस वन. Let me. Am I audible now? Yes, and very clearly. Very clear. Yes. Today is the day to have multiple disruptions, probably. Finally. Okay. So, question number 27. Right. So, we were discussing this. ये ही सिर्फ थोड़ा सा मैं ट्रिकी बोल सकती हूँ, एज आई वाज सेइंग. यहाँ पे जो की टर्म है, शायद बच्चों ने पकड़ा होगा. इफ दे वेंट फॉर इन्फरेंस टू ऑल्सो टू बी ट्रू, वन इज डेफिनेटली ट्रू, कि वहां पे लिखा है इंट्रोड्यूस, द स्कूल हैज इंट्रोड्यूस्ड कंपलसरी काउंसलिंग सेशंस. सो प्रोबेबली कुछ बच्चों ने इन्फर किया होगा, यानी इससे पहले तो नहीं थे, इंट्रोड्यूस कर दिया. बट हमारा कीवर्ड जो पकड़ना चाहिए था वो इंट्रोड्यूस नहीं है, वो है दे हैव इंट्रोड्यूस्ड कंपलसरी काउंसलिंग सेशंस. सो प्रोबेबली काउंसलिंग सेशंस तो पहले भी हो रहे थे, वो कंपलसरी नहीं थे. नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड कंपलसरी काउंसलिंग सेशंस, एंड इन्फरेंस टू इसीलिए ट्रैप है. सो दैट इज व्हाई द आंसर फॉर दिस वन शुड हैव बीन ए. अगर तीन ये कंक्लूजन और इन्फरेंस क्वेश्चंस में से सिर्फ इसीलिए इसको मैं थोड़ा ट्रिकी बोल सकती हूँ. ठीक. ठीक. नेक्स्ट दिस ना ना, ये तो वो है. ठीक है. ठीक है. Any other question? Question number 21, 27. And 18 was another reasoning based question. The rest of them were all analytical reasoning. This one. 18 ये वाला ना? 18 is a blood donation question. No. 18, 19. Yes, this. 18, this one. 18th. 19th was the. Again, ये कुछ 21st जैसा ही question है. If you look at the second line, however, staff have reported that the machine sometimes malfunctioned due to software errors. 21 में भी ऐसा ही दिया था. Sometimes there is a problem because of wet hands. है ना? So basically, now if you look at the नहीं सर, आंसर सेम नहीं होगा. यहाँ पे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन, जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, अगर आप पढ़े तो ऑटोमेटेड मेडिसिन डिस्पेंसिंग मशीन्स हैव कंप्लीटली एलिमिनेटेड डिलेज. एक्सट्रीम फिर से वो एक्सट्रीम चॉइस आ गया कि कर ही डाला है, बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है. जबकि क्लियरली मुझे सेकंड लाइन में, मेरे मेन स्टेटमेंट के सेकंड लाइन में उन्होंने हाउएवर करके एक लिमिटेशन ऑलरेडी दे दी है कि मशीन्स माल फंक्शन कर रही हैं कभी कभी. तो ऑफकोर्स कंप्लीटली एलिमिनेशन तो नहीं पॉसिबल है, तो दैट इज व्हाई द फर्स्ट वन विल नॉट फॉलो. द सेकंड स्टेटमेंट, सॉफ्टवेयर एरर्स कैन अफेक्ट द फंक्शनिंग, दैट इज ट्रू, क्योंकि वो सेकंड लाइन में एग्जैक्टली यही दिया है, लिखा ही हुआ है. सो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन 2 विल फॉलो. So if you would notice, question number 18 or 21 is on the same lines, but then the concept that they are checking is different. है ना? अगर कुछ बच्चों ने आपका वाला स्टाइल यहाँ पे लगा दिया कि इसका ए तो उसका भी ए, तो मजा आया होगा. Agreed. So ठीक है. So again, read thoroughly, read properly, then mark the answer. So, yes, catch the key term. Key term पकड़ना जरूरी है. Agreed. So basically, these kind of things happens to me in the exam when I do the verbal part. ठीक है. So, but I am not an aspirant anymore. So I think that works for me. ना, बट स्टिल यू आर लिमिटेड. अब मेरे को मैथ्स दिया तो मैं तो बिल्कुल ही ABCD करके आऊंगी शायद.
हाँ लेकिन ठीक है, अब जरूरत भी नहीं है उतना करने की, बट anyhow the students need to understand that what kind of things. And ma'am, I liked one thing that you told, that whenever conclusions questions, anyone is getting conclusion questions, they must ignore the extremist values, extremist statements, ये Correct. नहीं होगा या ये definitely होगा, so those kind of things. So I think this is something that is a very important learning for everyone, कि इग्नोर ही कर दो उसको तो बचने का कुछ तो हो ही जाएगा. So this is Right. what we have. Uh, so uh, thank you, ma'am, and let me continue with this part, LR part. So uh, hopefully I'll see you in the next analysis session, and you will come with new tips and tricks. Sure, in the sure. last in Okay the then. last session I have learned a couple of things. In this session I'm learning a couple of things, so more likely by the next session I'll be a seasoned faculty in verbal as well. Looking forward to that. Okay. Okay then. Bye Okay. bye everyone. Bye. Stop. So we have discussed till this point. So basically whenever you are solving, always remember, read thoroughly. Now, for example, if I'm going to solve this question, so basically, if I'm going to look every question, 65, 101, 26, 50, every number is square plus 1, right? This is not a square plus 1, answer is this. So, whenever you look at the numbers को देखने का एक नजरिया होता है. हमेशा देखिए प्राइम है, हमेशा देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, हमेशा देखिए परफेक्ट क्यूब है, या हमेशा देखिए कोई डेफिनेट डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, डिफरेंस अगर एक फिक्स डिफरेंस बन रहा है, सो बेसिकली ये 3-4 टाइप के पैटर्न होते हैं, इससे ज्यादा कोई पैटर्न नहीं होते. सो व्हेन यू आर गोइंग टू लुक एट द पैटर्न, सो इससे आप आंसर्स बहुत जल्दी निकाल सकते हैं किसी भी उसमें. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट मैम हैज ऑलरेडी कवर्ड. अगेन दिस क्वेश्चन इफ आई एम गोइंग टू लुक, आई डू इट इन राउंड 2, क्योंकि इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो बहुत छोटे और आसान है. तो आर राउंड 2 का मतलब पहले मैं एकदम सिंपल वन लाइनर, एक एक लाइन के क्वेश्चन खत्म कर लूंगा, फिर मेरे पास जितना टाइम बचेगा वो मैं इस टाइप के क्वेश्चन में दूंगा. तो जहां पे कोई क्वेश्चन है जहां 4 लाइन 3 लाइन में लिखा हुआ है, सो वहां पे मैं जनरली अवॉइड करता हूं कि उसको बाद में देखूंगा. क्वेश्चन नंबर 29 अगेन आई हैव कवर्ड. एंड व्हाई डिड आई कवर? बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज बीन by a lot of people. ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. ब्लड ये डायरेक्शन का, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्शंस. This one again, this is data sufficiency, and you need to learn how to pick up options in data sufficiency, and that is pretty important thing. So we'll I think we are going to do a session on selecting the options on data sufficiency, and please join that session. And I'm not sure when we are going to plan it, but we are definitely going to plan a session on selecting the options on data sufficiency, because ये वाले क्वेश्चन आते सबको हैं, क्योंकि हैं बहुत सिंपल. ब्लड रिलेशन है या आपका बेसिक मैथ्स हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन है. सिलेक्शन में गलती होती है, इसलिए ऑप्शन सिलेक्शन में गलती होती है, इसलिए लोगों के इसमें मार्क जाते हैं. अंडरस्टूड? अब मैथ्स पे आते हैं. तो मैथ्स में डीआई, स्टैंडर्ड डीआई, देयर आर 2 सेट्स, प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चंस, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 2 क्वेश्चंस, सेट थ्योरी, नंबर सिस्टम. सो बेसिकली मोर और लेस स्टैंडर्ड काइंड ऑफ थिंग. अगर आपके पास 12th में मैथ्स है, ठीक है, तो अच्छी बात है. आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है तो भी आई वुड से डोंट वरी अबाउट इट. मैट्रिक्स डिटरमिनेंट छोड़ देना, प्रोबेबिलिटी छोड़ देना, ठीक है, मेंसुरेशन छोड़ देना, ठीक है, फंक्शन छोड़ देना. बाकी क्वेश्चन तो आसान है, फट से हो जाएंगे. ठीक है, और बाकियों में सेक्शनल कट ऑफ निकल जाएगा. पीएनसी छोड़ देना. ठीक है. सो ये जो चीज है, ये कंटिन्यूटी, स्टैटिक्स, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है. अगर आपको इसमें कट ऑफ निकालना है, आपने out of 30 you are doing 10-11 questions or 12 questions, you are easily clearing the cutoff of this. ठीक है. But if you don't have a math background and you say I am very poor at math, so basically आपको बेसिक एप्टीट्यूड में बहुत हैवी स्कोर करना है. एप्टीट्यूड का मतलब आउट ऑफ 30 यू नीड टू अटेम्प्ट, आई वुड से 12-13 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 इसमें, और प्लस आउट ऑफ 15 12-13 क्वेश्चन आपको उसमें भी करने होंगे. क्या कहते हैं, योर
12 13 14 questions in your LR and 13 14 questions in VA, then only you are going to clearing the cutoff if you do not have a math background. सो दो सेक्शन कर लो, या फिर मैथ्स में 15 क्वेश्चन 15 16 क्वेश्चन करना बहुत आसान है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, अगर आपको सिलेक्शन करना है। सो 8 क्वेश्चन तो सीधे डेटा इंटरप्रिटेशन के हो गए, सेट थ्योरी सब नहीं पढ़ी है, 2 क्वेश्चन इसके हो गए, नंबर सिस्टम 2 क्वेश्चन इसके हो गए, टाइम एंड वर्क, एलिगेशन, योर इनइक्वालिटी, योर सीक्वेंस सीरीज, प्रॉफिट लॉस, क्वाड्रिलेटरल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अगर आप देखोगे तो 17 18 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको आते हैं, उसमें से आपने 15 कर ली, यू आर सेट, यू आर गुड टू गो। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ठीक है। Now, if you look, there are a lot of easy questions, a lot of questions that are easy medium. So, but the graph is pretty much uneven, unlike LR and VA. ठीक है। सो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन में। साइन एक्स का आपको कर्व पता होना चाहिए। इफ यू नो द कर्व ऑफ साइन एक्स, देन दिस क्वेश्चन इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। सो स्टैंडर्ड जो फंक्शन है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इसके ग्राफ याद कर लीजिए बस। सो साइन वेव वाला ग्राफ जो है उस टाइप से हम आसानी से कर सकते हैं। देन अगेन दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ योर प्रोग्रेशंस। लॉजिक लगाओ और सिंपल लिखते चले जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जीपी का क्वेश्चन है ये। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है, हाउ एनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन? यस, नो? अगर ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, आई टेल यू द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल अप्रोच है इसको करने का। सो आपके पास जो नंबर हैं, नंबर कितने टाइप डिजिट के हो सकते हैं? नंबर 1 डिजिट का हो सकता है, नंबर 2 डिजिट का हो सकता है, नंबर 3 डिजिट का हो सकता है, नंबर 4 डिजिट का हो सकता है। ठीक है। 1 डिजिट के कितने नंबर? 9। सो टोटल 9 इंटू 1 डिजिट्स है। ठीक है। 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे? 90, 10 से लेके 99। सो अपने पास टोटल 90 इंटू 2 डिजिट्स होंगे। ठीक है। 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे? दैट इज गोइंग टू बी 900। ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी? 900 इंटू 3। अब मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट देख रहा हूँ 9। अब मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट देख रहा हूँ कितना? यूनिट डिजिट देख रहा हूँ अपना 0। यहाँ पे यूनिट डिजिट देख रहा हूँ 0। ठीक है। अब ये 2700, तो 2700 2800 है। अगर मैं ये वाला ऑप्शन उठाता हूँ, सो 999 तक खत्म हो चुका है। यहाँ पे कितने आ रहे हैं अपने पास? 330। ठीक है। सो 330 इंटू 4, अगेन यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 0। ठीक है। ओवरऑल यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 9। कौन सा ऑप्शन? दैट इज दिस। खत्म। 999 के आगे नंबर होगा 2889 तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। इतने पेज होंगे तो इतने नंबर ऑफ डिजिट्स तो हो ही नहीं सकती अपने पास, तो बहुत ज्यादा डिजिट होंगे। गॉट इट? So basically, I am not calculating everything, Vashni. I am simply doing one thing. Unit digit निकाल लिया। You got my point? सिंगल डिजिट के कितने नंबर होंगे, उनमें कितनी डिजिट्स यूज होंगी। 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे, उनमें कितनी डिजिट्स यूज होंगी। 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे, कितनी डिजिट्स यूज होंगी। 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे, उनमें कितनी डिजिट यूज होंगी। दैट्स इट। सो केवल यूनिट डिजिट से हम आंसर निकाल सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी नहीं करना चाहिए। दैट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगेन दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ सेट थ्योरी बेसिक्स, पता ही होने चाहिए सबको। ये क्वेश्चन अगेन डिटर्मिनेंट अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। सो इसका तो डिटर्मिनेंट तो सीधे सीधे अपना हो जाएगा पी एस माइनस पी इंटू एस, दैट इज दिस माइनस दिस माइनस क्यू आर। मैक्सिमाइज करना है, मतलब पी एस को मैक्सिमाइज करना है, क्यू आर को मिनिमाइज करना है, दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। ये वाला क्वेश्चन किसी ने किया है? I'll tell you an approach to solve these kind of questions. किसी ने किया ये वाला क्वेश्चन? मैं तुम्हें एक बढ़िया अप्रोच बताता हूँ इसको करने का। लोग क्या करते हैं, इसको इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे अपन। ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो टोकन के है वो के टाइम आ रहा है, मतलब एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा। गॉट इट? ये है। अगर मैं n को 1 ही मान लूं तो मेरा एवरेज तो 1 आएगा। ठीक है। n को 1 डाल दिया, सो 2 इंटू 1 2 + 1 3, 3/3 1, ये हो सकता है।
n को 1 डाल दिया, 1 + 1 2, 2/2 1, ये हो सकता है। n को 1 डाल दिया, 1 × 3, 3/3 1 हो सकता है, एग्रीड। n को 1 डाल दिया तो 4/2 वैल्यू आ गई 2, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर मैं n को 2 डालूं तो मेरे पास नंबर हो गए 3, सम हो गया 5, मेरा आंसर आया, एवरेज आया 5/3। तो n को 2 डालने पे 5/3 आना चाहिए, 5/3 इसमें आ रहा है। 3/2 नहीं आ रहा है। n को 2 डाला तो ये कितना हो गया, 5 × 2 10/3, ये भी नहीं हो सकता। अपना आ गया आंसर ऑप्शन ए। समझ आया? कुछ नहीं करना है, कोई अप्रोच नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, नंबर डाला आंसर है, दैट्स इट। ठीक है, अगेन सेम टाइप ऑफ थिंग्स। सो quadratic mein, I'm not going to discuss a lot of questions over here. In quadratic again, if you are going to see, so you need to do the basic standard stuff, sum of roots, product of roots, और जब भी इस टाइप की चीजें होंगी ना, so एक काम करो, उसको अज्यूम ही कर लो। मेरे को अगर करना होगा ना इस क्वेश्चन को, मैं इसको इसका एक बड़ा सिंपल सा काम करूंगा कि ए बी सी सबको 1 दे दूंगा। ठीक है, मैं ए को 1 दे देता हूँ, बी को 1 दे देता हूँ, सी को 1 दे देता हूँ, और इफ के इक्वल टू सी, सो बेसिकली दिस इज डिफरेंट, तो मैं सी को 2 दे देता हूँ। ठीक है, के को भी मैं फिर के भी 2 हो जाएगा, एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। अंडरस्टूड? सो जब ये क्वेश्चन आएंगे तो अप्रोच ले लो। ठीक है, या फिर दिक्कत है तो ए को 0 मान लो, बी को 1 मान लो, सी को 2 मान लो, अपना आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ए को 0 मान लूंगा तो मेरा आंसर तब भी आ जाएगा, मैं देख लूंगा। अंडरस्टूड? So these kind of approaches you need to take. Intersection of diagonals, so basically basic geometry पता होनी चाहिए कि जो diagonals का intersection होता है वो दोनों diagonals एक दूसरे को bisect करती है, and that's why we need to take. The point of intersection of diagonals is origin, and one of its vertices is ठीक है, ठीक है. So basically one of the vertices is 4,2. ठीक है, so basically this is 4,2 and diagonals are intersecting at 0 0. ठीक है, दूसरी लाइन अपनी बीडी कुछ ऐसी होगी। ठीक है, सो बेसिकली हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और दोनों का मिड पॉइंट हमको निकालना है कि ओरिजिन आना चाहिए, दैट्स इट। अगेन फंक्शन, इफ यू नो द फंक्शन ठीक है, नहीं आता है छोड़ दो। ठीक है, सेट this is an easy question. So again, the percentage type of question are the questions where you can actually maximize the scores. You can solve it very quickly, get the answers very quickly and improve your score. Probability के ये वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, आता है, ठीक है, नहीं तो छोड़ो, ये भी छोड़ दो। दिस इज समथिंग यू कैन डू इन लेस देन अ मिनट। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज बोली हुई है कि अतुल takes 4 days and he does 10% of the work. Sahil takes 3 days and finishes 20% of the work. ठीक है, and Ashwin 2 दिन में कितना काम करता है, 25% वर्क। ठीक है, तीनों को 65% करना है। ठीक है, अब अगर मैं 4 दिन ले लूं तो 4 दिन में अश्विन तो 50% कर देगा, ये 20% से तो ज्यादा करेगा, तो 4 दिन में 70% हो गया, मतलब 4 दिन तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब अगर मैं 2 दिन की बात करूं तो 2 दिन में ये 25% ही कर रहे हैं, 2 दिन में ये 5% कर रहा है, मतलब 65% तो वैसे भी नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब 2 भी नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3, दैट्स इट। अंडरस्टूड? again whenever we are going to get these kind of questions, it is जब आपको एरिया मैक्सिमाइज करना होता है तो ऑलवेज मेक अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। ठीक है,
standard type of question. So basically, do one thing in the next mock. So basically, hmm. So in the next mock, what we are going to do, I would be expecting that you people have solved the whole mock, ठीक है, and ask a lot of questions कि कहाँ पे आप struggle कर रहे हो, किस टाइप के questions में struggle कर रहे हो, और किस टाइप के questions के आपको solution चाहिए, किस टाइप के question में आपको shortcut चाहिए. We are going to discuss all those things, and we are also teaching these kind of things in our classes. That is IIM Bangalore crash course. So if you haven't enrolled in the crash course, I would say that is the good time. We have 2.5 months left. So that's it from my end. Take care. Bye bye. Good night.